जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर। फटाफट लाइव हो जाइए, लगभग लोग सब लाइव हो ही चुके हैं। स्वागत करता हूं आपके प्लेटफॉर्म द न्यू लाइसियम फॉर इंग्लिश लिटरेचर पर। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी एक बार कंफर्म करिएगा एंड देन आई शैल स्टार्ट योर क्लास। जी हेमलता, कविता, सोनू, पूनम, सुरेश, बुशरा, निरंकार मिश्रा, पूरेन गंगवार, प्रियंका चौधरी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को शाम वाली गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय माता दी, सभी का स्वागत, सभी का वेलकम आपके प्लेटफॉर्म पर। ज्योति कनौजिया, प्रियंका चौधरी, सबको शाम वाली राम राम है, सभी को नमस्ते है, सभी को जय श्री राम है। आज के आपके पिटारे में यू आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस। और इजी और सिंपल क्वेश्चंस तो रोज रहते हैं, यू हैव टू कीप पेशेंस एज यूजुअल, और आपको विद पेशेंस आंसर करना है। ऑडिबिलिटी एक बार कंफर्म कर दीजिए, विजिबिलिटी एक बार कंफर्म करिए एंड देन आई शैल कंटिन्यू। जी सारिका सिंह जी नमस्ते, जूली गौतम जी को भी नमस्ते। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी एक बार कंफर्म करिएगा, क्लियर करिएगा एंड देन आई शैल स्टार्ट विद योर क्लास। जी रमेश जी, एवरीथिंग इज फाइन। मीरा सागर जी को भी गुड इवनिंग। राइट, एवरीथिंग सीम्स टू बी हंकी डंकी, चलो ठीक है जी, एवरीथिंग इज फाइन। जी सुरेश जी, मालीपुर से प्रणाम है। आइए, मालीपुर से प्रणाम है तो अयोध्या के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ, एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो डू शेयर योर चैनल फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग। राइट, चैनल शेयर कर दीजिए, फिर क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिए। First question is here on your screen. An alexandrine is the last line of. What is an alexandrine? Alexandrine होता क्या है? An alexandrine is the last line of. किसकी last line होती है? Spencerian stanza, rhyme royal, terza rhyma और ottava rhyma। जी फटाफट come on with your answers। इसीलिए बोला ना कि टुडेज क्वेश्चंस आर वेरी 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 सिंपल। सिंपल क्वेश्चन की सीरीज है आज, फटाफट करते रहिए, आंसर करते रहिए। सबका सवाल आज सही होना है, किसी का सवाल आज गलत नहीं होगा। जी फटाफट आंसर करते रहिए। जी सुरेश, हेमलता, कविता, रमेश, राइट, प्रियंका, जूली, नीरज, हुजा, नूरी, यजदानी, शयोगिता, तेनवार। जी एब्सोल्युटली, Alexandrine is a line in iambic hexameter. Right? Alexandrine is a line in iambic hexameter, and iambic hexameter lines are called an alexandrine. Right? Iambic hexameter line को alexandrine कहते हैं, and an Spencerian stanza consists of 9 lines. 9 लाइन्स होते हैं स्पेंसिरियन स्टैंजा में, एंड दीज 9 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट 8 लाइन्स जो है दे आर इन आयम्बिक पेंटामीटर। राइट, दे आर इन आयम्बिक पेंटामीटर, एंड द लास्ट लाइन जो होती है, लास्ट लाइन मीन्स 1 लाइन इज इन आयम्बिक हेक्सामीटर। राइट, आयम्बिक हेक्सामीटर में लास्ट लाइन होती है, एंड दिस आयम्बिक हेक्सामीटर इज कॉल्ड alexandrine. So the right answer is A. And what is the rhyme scheme of Spencerian stanza? Right, Spencerian stanza की rhyme scheme होती है A B A B, C D C D, है ना, और उसके आगे ऐसे होती है ना, कुछ और होता है। बताइए राइम, स्पेंसिरियन स्टैंजा की राइम स्कीम बताइएगा। ये तो नहीं होती। ये राइम स्कीम है कि ये राइम स्कीम है स्पेंसिरियन स्टैंजा की? यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। जी श्वेता त्रिपाठी, रीता राज, मिथिलेश, भावना, एवरीबडी इज फाइन, आशुतोष चौधरी, सर जी गुड नाइट, राम कुमार चौधरी जी, कभी किसी को मिलने पर गुड नाइट नहीं कहते,
गुड नाइट तो तब कहते हैं जब पार्ट करना हो, जब अलग होना हो, रात में जब अलग अलग दोनों होने लगे तो गुड नाइट करते हैं। और अगर आपके घर में कोई 10 बजे भी आ जाए ना तो उसको गुड इवनिंग करते हैं, उसको गुड नाइट बिल्कुल नहीं करते। राइट, द राइट आंसर इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसिडियन स्टैंजा इज ए बी बी सी बी सी सी। ये राइट आंसर है, दिस इज द इनकरेक्ट वन। ये आयम्बिक क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर की 8 लाइंस, लास्ट लाइन इन iambic hexameter with the rhyme scheme of ABAB, BCBC and C. Interlocking rhyme scheme होती है। राइट, यस विजय लक्ष्मी, एब्सोल्युटली फाइन। प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोई डाउट तो नहीं रह गया ना? पक्का? इफ यू वोंट हैव एनी डाउट, कोई डाउट ना रह जाए तो ही प्रोसीड करूंगा, आराम से इत्मीनान से बताइएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर on your screen, that is question number 2. Question number 2, Falstaff was first introduced in। Falstaff को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में और इन किंग जॉन। Right, in which play Falstaff was introduced first? Falstaff को पहली बार कहां पर, किस प्ले में इंट्रोड्यूस किया गया था? बताइए आंसर फटाफट। Falstaff was first introduced in which of the given plays? Right, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और किंग जॉन। ऑल ऑफ द प्लेस गिवन हियर वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सारे के सारे विलियम शेक्सपियर के प्लेस हैं। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड किंग जॉन। These 3 are historical plays. Right, these 3 are historical plays, and you know that Shakespeare's history plays are divided into 2 parts, Roman history and English history. As far as English history is concerned, he covers 350 years time. 350 साल का टाइम कवर करते हैं। एंड क्रोनोलॉजिक की बात की जाए तो किंग जॉन इज क्रोनोलॉजिकली द फर्स्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। राइट, एंड Falstaff the character was first introduced in the play Henry IV Part 1. Right, he was introduced in Henry IV Part 1 and later Henry IV Part 2. इसमें भी आता है वो कैरेक्टर। And then Queen Elizabeth requested William Shakespeare to introduce Falstaff into a comedy, and Shakespeare, on the behest of Queen Elizabeth, wrote the play Merry Wives of Windsor, and here he introduced the character Falstaff as a comic character, and Falstaff is Shakespeare's greatest comic character. Right, greatest comic character Shakespeare का Falstaff है। All right, fine. कोई confusion? Not at all. All these questions are UPPGT, PGT, EMRS and NVS। सारे क्वेश्चंस वहीं के हैं, इसलिए आपको सिंपल भी लग रहे होंगे, बट ये जब पेपर में आते हैं तो सिंपल नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्स फॉर्म यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 syllables इज नोन एज। बोलिए। A verse form using a stanza of 8 lines, each with 11 syllables. Each with 11 syllables क्या कहा जाता है उसको? स्पेंसिडियन स्टैंजा, बैलेड अथवा राइमा और राइम रॉयल। यस, कविता, बुशरा, साक्षी, अजय, विजय लक्ष्मी, शरिता, ज्योति, श्वेता, रीता, हुडा, मिथिलेश, सुरेश,
पूनम, मौसमी, जूली, भावना, प्रियंका, एसजेड, फिरोज, मीरा, प्रियंका, राजेंद्र, मिथिलेश, एसजेड, हेमलता, सुबोध, कितना जानते हो ना, रमेश, कामिलिनी, बारिक, नूरी, यजदानी. The right answer to the question is Ottawa Rhyma. As you say that here 8 lines are mentioned. Spenserian stanza consists of 9 lines. A ballad stanza consists of 4 lines. Quatrain होता है. Ottawa Rhyma is consisting 8 lines and rhyme royal consists of 7 lines. Yes, these are the stanza patterns. Right, Ottawa Rhyma is the obvious answer. Right, Ottawa Rhyma is an Italian form of poetry and it was brought to England by Sir Thomas Wyatt during Renaissance pre-Elizabethan period. Right, it was brought from England or from Italy to England by Sir Thomas Wyatt. Right, वो इसको लेकर के आए थे and Ottawa Rhyma consists of 8 lines and each line is of 11 syllables. 11 syllables की होती हैं rather than decasyllabic lines. Decasyllabic lines are used in blank verse, are used in heroic couplet, right? Iambic pentameter, but it is not pentameter. It has one extra syllable, right? That is the 11th syllable. All right. So right answer is C. Question number 4. An idiom is, है ना मेरे simple से questions are very simple ना जी. keep on sharing your class, keep on sharing. एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए जी. बिंदु यादव को गुड इवनिंग, स्वाति चौधरी को भी गुड इवनिंग. people are still coming, please do share or do send your invitation to others. An idiom is, what is an idiom? A common expression meant to sound sarcastic and implausible to the listeners or readers. A commonly used phrase or expression with a meaning different from a literal translation. An idiotic expression repeatedly used by cultural or language group or none of the above. What is the true definition? What is the correct definition of an idiom? Idiom को हिंदी में आप बोलते हो मुहावरा. What is an idiom? In an idiom, words remain simple. Words remain simple, but they do not denote the simple meaning. They connote the meaning. Meaning is quite different from the apparent meaning. Right? There is always a hidden meaning. Right? हमेशा hidden meaning होती है. And the right answer to the question is, it is a commonly used phrase or expression with a meaning different from the literal translation. आप हिंदी में बोलते हो थोथा चना बाजे घना, आधे जल गगरी छलकत जाए, बट हिंदी आधी जल की गगरी छलकती रहती है. बट जब आप लिटरल ट्रांसलेशन पर जाओगे तो ये मीनिंग है. और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, लिटिल नॉलेज ऑलवेज मेक्स नॉइज. राइट, तो लिटरल मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मेन मीनिंग. राइट, ये साइड हो जाया करिए. ठीक भाई, साइड हो गया हूं. और जिसने सी आंसर दिया है पूनम गंगवार ने, उनका आंसर बिल्कुल गलत है. इट इज नॉट एन इडियोटिक एक्सप्रेशन. इडियोटिक मीन्स फूलिश. An idiom is not a foolish expression, but an idiom is very scholarly expression. बहुत scholarly expression होता है. Right answer to the question is B, not C. All right, C नहीं, B इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड कर सकते हैं आप, अगर समझ आ गया हो तो. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. In which poem does Wordsworth write, "Come forth into the light of things, let nature be your teacher"? Empty vessels sound much. ये idiom है. Yes. In which poem does Wordsworth write, "Come forth into the light of things,
लेट नेचर बी योर टीचर, नेचर को ही अपना टीचर बनने दो। द टेबल्स टर्न, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, I wandered lonely as a cloud, the solitary reaper. Right, the lines are taken from come forth into the light of things. Where are the light of things? Light of things are in the lap of nature, not in the textbooks, not in any books. And the writer is, the narrator is calling the person who was reading the book, right? Matthew उसको बुला रहा होता है, saying that you cannot find solace in books. Solace जो है, consolation जो है, solace and consolation is in nature, and let nature be thy teacher. A teacher, a person who is in the form of teacher cannot teach you, nature can teach you better. Right? Nature can teach you better. So this line is from the Tables Turned. Right? There are two poems, the Table Turns and Expostulation and Reply. Expostulation and Reply is also known as, दूसरा नाम क्या उसका, सिस्टर पोयम उसको कहा जाता है. It is a sister poem of Tables Turned, right, where he depreciates the reading of books. और किसको अप्रिशिएट करता है? अप्रिशिएट वहां पर करता है नेचर को. राइट, टेबल्स टर्न की लाइन से आंसर, राइट आंसर इज ए. प्रोसीड करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6. A hymn is, what is a hymn? A poem of joy, a poem of lament, a poem of praise, a church song. What is a hymn? कितना पीछे चल रही हो संयोगिता? फिर से समझाऊंगा आपको. I'll come back to you. What is a hymn? Hymn is a type of poetry, right? And which type of poetry is a hymn? Whether it is a poem of joy, it is a poem of lament, it is a poem of praise, it is a poem of religious purposes, church song. Right? What is the right answer? Everybody has the right answer except Huda. The right answer to the question is what? The right answer to the question is, it is a church song rather than it is a poem of praise. Hymn माने होता भजन, चर्च सॉन्ग होती है बेसिकली वो. Which of the following books was translated by John Keats? Congratulations, BK Sugandha. Have you brought some sweets for us? Ji Rinki Devi from Rampur. Namaste. जय माता दी. इट्स ओके, कोई नहीं. आज तो आप सेलिब्रेशन में ही बिजी हैं. पार्टी पे पार्टी चल रही होगी, गेस्ट पे गेस्ट आ रहे होंगे आज, है ना. कुछ इधर भी सप्लाई कर दीजिए. एड्रेस भेज दूं क्या? कुछ हमारे बच्चों को भी मिल जाए. देखिए, सब इंतजार करते रहते हैं कि किसी का सिलेक्शन हो और स्वीट्स बटे, है ना. और तो आप स्वीट्स के बिना लिए ही आ गई हैं. ये तो बिल्कुल गलत बात है ना. कीट्स ने किसका ट्रांसलेशन किया था? Which of the following books was translated by John Keats? Aeneid, Iliad,
Odyssey or Metamorphosis. Which of the books given here were translated by John Keats? जी यूपीपीजीटी वाले फटाफट आंसर करिए भाई, फटाफट आंसर करिए, बहुत कम आंसर्स आएंगे एंड सारे करेक्ट भी नहीं है। बोलिए आंसर फटाफट, फटाफट आंसर के साथ आइए, ऐसे कैसे काम चलेगा। The poems translated by John Keats. Which of the following poems was translated by John Keats? चलें प्रोसीड करें। The poem that Keats translated was Aeneid. Aeneid was an epic poem written by Aeneid was an epic poem written by Virgil in Latin. Virgil ने लैटिन में लिखी थी to eulogize Rome and Romans. रोम एंड रोमन्स को यूलोजाइज करने के लिए। Iliad and Odysseus, these are the epics written by Homer. And Metamorphosis was written by Ovid. And Mr. Keats translated Virgil's poem Aeneid. वर्जिल की पोयम एनीड का ट्रांसलेशन किया था जॉन कीट्स ने, राइट। जॉन कीट्स ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एनीड। वैसे एनीड की 2 बुक्स वर ट्रांसलेटेड बाय सर हेनरी होवर्ड। सर हेनरी होवर्ड, he had also translated Aeneid's 2 books, book 2 and 4. Book 2 and 4 by Virgil was translated by Sir Henry Howard, and John Keats translated Virgil's Aeneid. All right, next question. Question number 8. Which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic? Simple question. Greatest autobiographical epic by Wordsworth. Guilt and Sorrow, The Prelude, The Excursion, Peter Bell. Which one of the following is a autobiographical epic written by Wordsworth? सबको भूलने की बीमारी हो, परेशान ना हो और मैसेज लिख के डिलीट करने की बीमारी भी मत पाले भाई। मैसेज लिख के डिलीट ना करें, आंसर इसका बताएं कि द ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक रिटन बाय मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। सबका आंसर सही है, एब्सोल्युटली। प्रदीप सोलंकी, स्वाति मिथिलेश, प्रियंका सागर, श्रुतिका बिंदु, नूरी सिब्बू, मौसमी खातून, मिथिलेश प्रकाश। Right, everyone is right here. And what was the full name of the prelude? Just write the full name of the prelude in your comment box section. I want to make clear that you understand, you know the proper title of the book, The Prelude. What was the complete title of the poem Prelude? Complete title क्या है पूरी prelude की? Yes, come on with your answers. The complete title of the epic Prelude. Mr. Wordsworth started the composition of Prelude just after the publication of lyrical ballads in 1798. And from 1798 to 1839, he kept on revising the poem Prelude. And in 1843, he became the poet laureate. And from 1843 to 1850, he could not publish the book Prelude. And finally, the Prelude was published in 1850 after his death. Nobody has written the complete title so far.
कंप्लीट टाइटल किसी ने नहीं लिखा है, राइट। अलर्ट वाला क्वेश्चन है, राइट। वार्निंग बेल वाला क्वेश्चन है। नोबडी हैज रिटेन द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम yet and I am still waiting for that golden answer, right? Guilt and sorrow prelude, तो आपने आंसर बता दिया, this is the prelude, but my question was what is the complete title? What was the complete title of the prelude? Not at all. No. The prelude or the growth of poet's mind and autobiographical poem, इतना बड़ा उसका नाम है। The prelude or the growth of poet's mind and autobiographical poem. This is the complete name of the poem, published in 1850 and dedicated to his friend Samuel Taylor Coleridge. And the book Prelude was divided into 14 books. Right, 14 books में divide की गई थी, and in 14 books he talks about his life from his childhood till maturity. Right, the growth of poet's mind and autobiographical poem. This is the complete title of the book. Right answer is B. Complete title has not been asked. Otherwise you could have clicked the right or the wrong answer. Right, okay, कोई बात नहीं। आप तो ऑब्जेक्टिव वाले हो, क्यों फुल रटोगे, आएगा पेपर में टिक्का मारी दोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मीटर इज एन एपिक रिटन इन? व्हाट मीटर इज एन एपिक रिटन इन? एपिक किस मीटर में लिखी जाती है? स्पॉन्डाइक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, dactylic hexameter or trochaic trimeter? In which meter epic is written? What is the proper meter of epic? Epic का proper meter क्या है? Ninth, question number 9. Right answer, पूनम, सोनू, अशोक, विजय लक्ष्मी, श्वेता, भावना, सुबोध, मिथिलेश, प्रियंका, बुशरा। शाबाश। व्हाट इज एन एपिक मीटर? शाबाश। हेमलता, रमेश, हुडा, स्वाति, एसजेड, बुशरा, बीके, आरती। बीके तो को खाली हंसना है, सिलेक्शन हो गया भाई। तो कब से हो रही ज्वाइनिंग? मिथिलेश, प्रकाश, स्वाति चौधरी, नीरज कुमार, सुमेधा वर्मा, कविता जायसवाल, मौसमी खान, अजय मिश्रा, सारिका, प्रियंका, ज्योति कनौजिया, नीरज, मिथिलेश, संयोगिता। रिपीट करने लगे हैं अब आप। चल कोई बात नहीं। राइट आंसर जो है, एपिक मीटर किसको कहा जाता है? एपिक मीटर इज नॉट आयम्बिक पेंटामीटर. दिस इज नॉट द एपिक मीटर, and almost of you have clicked answer B. So those who have clicked answer B, they will not get the marks. उनको marks नहीं मिलने वाले हैं. But if you are in DSSSB, you will get the mark. You will get the mark. If you have incorrected the question, you will get minus 25. You will get minus 25 if you are in DSSSB. But if you are in UPPGT PGT, then you will not be in minus, plus में भी नहीं होंगे. लेकिन right answer is C. Dactylic hexameter is called epic meter. Dactylic hexameter is called epic meter. This is the right answer. Right answer is C, not B. Mind your answer. Iambic pentameter is not the epic meter. Iambic pentameter is used for blank verse. Iambic pentameter is used for heroic couplet, and iambic pentameter was a very popular meter during the Renaissance and neoclassical period. And blank verse उसी के साथ था. But dactylic hexameter was employed by Homer, was employed by Virgil, employed by Ovid in his epic. Right answer is 10th का आंसर सी है, नॉट बी. बी के साथ जो लोग हैं वो अपना आंसर सही कर लें. ऑलराइट, चलो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, आपको कंफ्यूजन कहां से हुई? आपको कंफ्यूजन हुई मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से। मिल्टन रोट हिज पैराडाइज लॉस्ट इन आयम्बिक पेंटामीटर इन ब्लैंक वर्स स्पेसिफिकली। Blank verse is written in iambic pentameter, but only Milton used iambic pentameter ना। और इसका मतलब ये नहीं कि एपिक मीटर ही iambic pentameter हो गया। एपिक मीटर ही iambic pentameter नहीं हुआ है। मिल्टन की पोयम Paradise Lost is written in iambic pentameter, that is true. All right, could I proceed? आगे बढ़े ना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी नहीं हटाइएगा। और सूत्र, सारा फार्मूला तो आप जानते ही हैं कि दुर्घटना से देर भली। चल कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Who invented the term sprung rhythm? Who invented the term sprung rhythm? Hopkins, Tennyson, Browning or Wordsworth? Sprung rhythm was invented by. A very simple question for you guys. Several times you have done with this question. सच में मिल्टन ही दिमाग में चल रहा था। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है ना, वो मैं तुरंत पकड़ लेता हूं कि आप कहां से आंसर लगाए हो, कहां से सोच के आप आंसर लगाते हो, तुरंत समझ आ जाता है ना। पॉपुलर मीटर, दैट्स वाई। और पॉपुलर क्वेश्चंस नहीं आते भाई, और पॉपुलर क्वेश्चन सिलेक्शन भी नहीं दिलाते, है ना। सावधानी हटी, सब्जी पूड़ी बटी, ये रमेश यादव जी के यहाँ कल्चर है ना। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना। चलो, ये आंसर है जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस इन्वेंटेड द स्प्रंग रिदम, राइट। स्प्रंग रिदम के लिए जीएम हॉपकिंस जाने जाते हैं। जीएम हॉपकिंस इज ऑल्सो नोन फॉर इंस्ट्रेस एंड स्केप, एंड ही इज ऑल्सो नोन फॉर व्हाट? कर्टल सोनेट। राइट आंसर इज ए। आते हैं, प्लेजर प्लेटफॉर्म भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, व्हाट द प्लेजर, यू आर हियर। Which of the following plays of Shakespeare has an epilogue? Which of the following plays of Shakespeare has an epilogue? The Tempest, Henry IV Part 1, Hamlet or Twelfth Night? 4 plays by Shakespeare. In which play there is an epilogue? And you know, in Midsummer Night's Dream, there is an epilogue. In Midsummer Night's Dream, there is an epilogue. And in the play As You Like It, there is an epilogue. And these two plays are not given in options. Then which play has an epilogue? Epilogue है किसमें? शाबाश, Absolutely, शाबाश, very true. Midsummer Night's Dream में epilogue was spoken by Puck. In As You Like It, the epilogue was spoken by Rosalind. And in The Tempest, the epilogue is spoken by Prospero. Epilogue is spoken by Prospero, and there is no epilogue in rest of the 3 plays, right? Camillini, there is no epilogue in Hamlet, right? There is no epilogue in Henry IV, there is no epilogue in Twelfth Night. Epilogues are in The Tempest, Midsummer Night's Dream, and As You Like It, and in Romeo and Juliet there are 2 prologues. Right, in Romeo and Juliet there are 2 prologues. Clear? Question number 12. Once again a simple question. Oedipus complex is, what is an Oedipus complex? A kind of physical ailment, a father's attraction towards his daughter, a brother's attraction towards his sister, a son's attraction towards his mother. What is Oedipus complex?
Oedipus complex and Electra complex. These two complex theories were propounded by Sigmund Freud. Sigmund Freud was a psychoanalyst. उन्होंने थ्योरी को propound किया था. And what is the meaning of Oedipus complex? Oedipus complex means a son's attraction towards her mother or mother's attraction towards her son. इसको बोलते हैं Oedipus complex, and Hamlet is the best example of Hamlet, Oedipus complex. And Sons and Lovers written by D.H. Lawrence, वो example है Oedipus complex का. And father's attraction towards his daughter, ये example है Electra complex का. Right, this is the example of Electra complex. Father's attraction towards his daughter, your daughter's attraction towards his father. All right, so right answer to the question is D, question number 12. Question number 13. फिर से 12 आ गया क्या? चलो 2 12 हो गया है, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका क्वेश्चन. Who among the following made the statement poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty? Poetic truth, poetic beauty, इनकी बात कौन करता है? Criticism of life की बात कौन करता है? And in yesterday's class you have discussed this question, and now the same question in another cloth. दूसरे कपड़े में सेम क्वेश्चन आया है. कम एंड आंसर. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 12 भी है ये, 13 नहीं कहा जाएगा, as 13th will be different question. Matthew Arnold, Dr. Johnson, T.S. Eliot, I.A. Richards. Everybody's answer is correct except Sonu. This statement was made by Matthew Arnold. Matthew Arnold का statement है ये, poetry is the criticism of life. Poetry is the criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Now question number 13. What is the subtitle of the play Twelfth Night? Subtitle of the play Twelfth Night. Or what is you will, or what you will, or what you like it, or what you think. What is the subtitle of the play Twelfth Night? Twelfth Night की subtitle क्या है? The subtitle of the play Twelfth Night is What You Will. क्या subtitle है? The subtitle of the play Twelfth Night is What You Will. Option is B. Right? Though it seems to be confusing, but you have cleared the answer. Right? What You Will is the subtitle of the play Twelfth Night. Next question, question number 14. The idea of university is. What is the idea of university? Right, Mithilesh is on cycle, he is riding, balle balle. The idea of university is a book by John Henry Newman. John Henry Newman, and he was a rector of a university during the Victorian period, and he had delivered several lectures, and the lectures were composed in a book called The Idea of University. अरे आप आंसर दीजिए भाई मिथिलेश, मैं तुमसे फास्ट चलने के लिए तैयार हूं.
बताइए विच वन इज द राइट आंसर। क्लियर करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। नीदर फास्ट नॉर स्लो, आई हैव माई ओन स्पीड, और हमको सबको लेकर के चलना है। आप बताओ आंसर क्या होना है यहां। द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज, बोलिए फटाफट, तब तो आगे बढ़ेंगे ना। कैसे आगे बढ़ जाए बिना आंसर के। इसका जो राइट आंसर है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी इज अ प्ली फॉर लिबरल एजुकेशन। इट इज अ प्ली फॉर लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन की एक दलील है, एक अपील है जॉन हेनरी न्यूमैन की। सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए, एंड दिस इज टोटली कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आपने सिर्फ तुक्का लगाया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, बट चलिए तुक्के से ही एक नया क्वेश्चन आपने सीखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। With this key, Shakespeare unlocked his heart. The words are from, there was a key, and key was sonnet, right? Key was sonnet. And who said that with this key Shakespeare unlocked his heart? शेक्सपियर ने अपने दिल का ताला खोल दिया था इस की से, और वो की कौन सी है? बोलो बोलिए फटाफट बोलिए जी। थैंक यू नेहा। Who said that with this key, with sonnet, Shakespeare unlocked his heart? Coleridge, Wordsworth, Hazlitt, or Lord Byron? Four options are here, and the statement with this key Shakespeare unlocked his heart was taken from London 1802। यहां से लिया गया है क्या? What is the name of the poem from which the line has been derived? राइट आंसर तो आपने विलियम वर्ड्सवर्थ लगा दिया ना, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर, बट फ्रॉम विच पोयम द लाइन हैज बीन टेकन? न्यू क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोयम द लाइन हैज बीन टेकन? ऑप्शन एक ये है, ऑप्शन टू है नन्स फ्रेट नॉट, नन्स फ्रेट नॉट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, this is also known as sonnet upon sonnet. यहां से लिया गया है, या फिर scorn not the sonnet, यहां से लाइन ये ली गई है, या फिर daffodils? From which poem the line has been taken? शाबाश, वेरी गुड। राइट आंसर बताइए, बाकी ये मत बताइए क्या। From which poem the line has been taken? With this key Shakespeare unlocked his heart. The line has been taken from the sonnet. Critics scorn not the sonnet. Right answer इसका C है, not B. All right, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। The rhyming of vowel sounds without the rhyming of consonants is known as, the rhyming of vowel sounds without the consonant, without the rhyming of consonants is known as rhythm, consonance, assonance, alliteration. बोलिए आंसर, which one is the right one? The rhyming of vowel sounds without the rhyming of consonants is known as
rhythm, consonance, assonance, or alliteration? Right answer to the question is 16th question. Yes, come on. Kavita says B, rest of the other said C. Swati says assonance. G, Bushra, Ashok, Bhavna, Swati, Priyanka, Pooja, Kavita, answer changed. Chalo. Neeraj Kumar, alliteration is not the repetition, rhyming of vowel sounds. Rhyming of vowel sounds is assonance. Rhyming of consonant sounds is consonance, right? And alliteration is the figure of speech where the adjacent sounds जो है वो मैच करते हैं. Question number 17. The figure of speech, the holy time is quiet as the nun. The holy time is quiet as the nun. Right answer. Metaphor, hyperbole, personification, or simile. What is the right answer? Which figure of speech has been used here? Question number 17. बोलिए फटाफट. Come on. Metaphor, hyperbole, personification, or simile? Yes, Mausami according C, Rinki Devi C, Sonu D, Bushra D, Ajay D, Poonam D, Huda simile, Shibbu simile, Sanyogita, Priyanka, Rita, Bhavna, Sarika, Meera, Shabash. देखिए, two options are correct here. Two options are correct, but obvious answer is as, और इसलिए आपने simile लगाया है. Right here, holy time is being compared with a nun. Holy time is being compared with a nun, so the right answer is simile. Right answer simile है. And holy time is quiet. Time quiet कैसे हो सकता है? A time has no tongue. बात तो नहीं कर सकता ना. And बात नहीं कर सकता, it means ये personify कर दिया गया है, तो personification भी इसका आंसर है. There are two answers, C as well as D. जिसने जिस पर लगाया है सबका सही है. Next question 18. The sea that bears her bosom to the moon. The figure of speech here is simile, metaphor, personification, oxymoron. जी प्रतिभा उपाध्याय जी, good evening. The sea that bears her bosom to the moon. Figure of speech once again. Simile, metaphor, hyperbole, simile, metaphor, personification, or oxymoron. Right answer is yes. C. This sea bears her bosom. Sea doesn't have a bosom. And how can it bear the bosom जब bosom ही उसके अंदर नहीं है? Bosom तो human being के पास होता है. ये real personification है. Right answer is C, personification. All right. Next question 19. The figure of speech in pluck from the memory a rooted sorrow. Pluck from the memory a rooted sorrow. What is the figure of speech here? Simile, metaphor, oxymoron, hyperbole. Options are same. Questions are changing, answers are changing. What is the right answer here? मेटाफर तो हर लाइन होती है. ईच लाइन इज मेटाफर. हर लाइन मेटाफर होती है विदाउट एनी डाउट. ईच लाइन इज मेटाफर विदाउट एनी डाउट. राइट, बट देयर इज डिफरेंस. राइट, अगर कोई और फिगर ऑफ स्पीच है तो आपको उसको टिक करना है. राइट,
figure of speech in pluck from the memory of a rooted sorrow. Pluck from the memory of rooted sorrow, it is hyperbolic. Right, it is hyperbolic. Sorrow is rooted and you have to pluck. Pluck from the rooted. So it is almost impossible. इसको बोलते हैं hyperbolic. Next question. Question number 20. Mr. and Mrs. Chamberlain are characters in. Mr. and Mrs. Chamberlain are characters in Murder in the Cathedral, Elder Statesman, Family Reunion, The Cocktail Party. All these are the 4 plays by T.S. Eliot. T.S. Eliot के plays हैं ये. Murder in the Cathedral, The Elder Statesman, The Family Reunion, The Cocktail Party, and Mr. and Mrs. Chamberlain. They are the characters. And in which play Mr. and Mr. Chamberlain appears? Right, UPPGT special question है, बताइए आंसर. जी आंसर बताइए फटाफट, सबके आंसर देख रहा हूं. शाबाश. Mr. and Mrs. Chamberlain are characters in Cocktail Party. शाबाश. Cocktail Party के वो characters हैं प्रियंका पाठक. If you are preparing for PGT, you need some corrections. Right, आपको भी और hard work की जरूरत है. Question number 21. Whose birthday is celebrated in the family reunion? Family Reunion is also a play by whom? Family Reunion is also a play by T.S. Eliot. Whose birthday is being celebrated? And on the occasion of birthday, the family is to reunite. इसीलिए उसका नाम है Family Reunion. Whose birthday is being celebrated? Harry, Agatha, Dr. Warburton, Amy, Lady Montmorency. किसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 21. जी कम ऑन, जल्दी करिए भाई फटाफट. जी जूली गौतम, सोनू भगवतिया, आशिक गोराल, स्वाति चौधरी, हेमलता उज्जैनिया, अपराजिता, रीता राज. अबाश. राइट आंसर. किसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है? द बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑफ एमी. एमी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है इन द प्ले द बर्थडे पार्टी. हैरी हैज बीन लिविंग इन अमेरिका एंड ही हैज कम टू ज्वाइन द फैमिली, दैट इज द फैमिली reunion. राइट, बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑफ एमी. राइट आंसर इज D. Question number 22. Who among the following introduced sonnet in English poetry? Who among the following introduced sonnet in English poetry? Milton, Wordsworth, Wyatt, Shakespeare. Simple answer. Simple question. Who among the following introduced sonnet in poetry? पोएट्री में सोनेट. सबको इसका आंसर पता है? इट वाज सर थॉमस व्याट who brought Italian sonnet from Italy, Petrarchan sonnet from Italy to England.
इटली से इंग्लैंड लाने वाले सर थॉमस व्याट थे, एंड फ्रॉम सर थॉमस व्याट द सोनेट वाज टेकन बाय सर हेनरी होवर्ड, एंड सर हेनरी होवर्ड modified the Petrarchan sonnet, and after modifying it he made the Shakespearean sonnet, he made the English sonnet. So right answer to the question is C. Right, C इसका right answer है. हेमलता has clicked on two options C and D और वो सही नहीं है. Question number 24. Question number 24. Who wrote about whom? अरे भाई, thy soul was like a star. Who wrote about whom? Thy soul was like a star. Whose soul was like a star? And who says? Milton about Shakespeare, Keats about Milton, Wordsworth about Milton, or Milton about Spencer? Right? 23 गायब हो गया. एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया था ना 12 नंबर पे, तो नंबरिंग डिस्टर्ब हो गई होगी, इसीलिए हो सकता है गायब हो गया हो, या हो सकता है अभी बैक करके देख लेता हूं. पहले इसका आंसर बता दे. Thy soul was like a star. GPK नमस्ते. So late. Thy soul was like a star. Whose answer, whose comment is this on whom? Right, the line is taken from London 1802. That is a sonnet on Milton. Milton पर sonnet है, and in that sonnet Wordsworth invokes Milton and he calls Milton. बुला रहे हैं मिल्टन को कि आइए, आपका स्वागत है. इंग्लैंड हैज नीड ऑफ दी. इंग्लैंड को आपकी जरूरत है. वर्ड्सवर्थ ऑन मिल्टन. राइट आंसर इज सी. लो आ गया. गलती से स्किप हो गया था, बट आई एम हैप्पी कि यू पीपल हमेशा कितना अटेंटिवली क्लास अटेंड करते हो ना, and I am very grateful to all of you for paying so much serious attention to my class. Right, इतना ध्यान से आप सुनते हो. Even you cannot miss any question. Question number 23 is here on your screen. Read and write. He considered romanticism liberalism in literature. Who considered romanticism liberalism in literature? किसने कहा था कि रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म है लिटरेचर में? वर्ड्सवर्थ ने, प्लेटो ने, विक्टर ह्यूगो, वाल्टर पैटर. 4 नेम्स आर गिवन हियर. राइट, बताओ आंसर. विक्टोरियन romanticism is liberalism in literature, and neoclassical period was classicism in literature. And from classicism we come to liberalism. And it was Victor Hugo who said that romanticism was liberalism in literature. Right answer is C. Shwati क्या भेज दियो with 3 emojis, 3 witches हैं क्या हो? Question number 25. Nature never did betray the heart that loved her. Nature कभी धोखा नहीं देता. Nature never did betray the heart that loved her. These lines exist in Immortality Ode, Ode to Duty, Michael, Artington Abbey. From which poem these lines are taken? Nature never did betray those who loved her. नेचर कभी उनको धोखा नहीं देता जो उनसे मोहब्बत करते हैं, है ना जी. हुजा, मीना, ज्योति, सुबोध, सान्या, रीता, सारिका, अजय, बुशरा, स्वाति, पूजा, श्रुतिका, कविता. राइट, शाबाश. नेचर नेवर डिड बिट्रे दोज हु लव्ड हर. दिस लाइन वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ये तो क्लियर ही है. एंड फ्रॉम विच पोएम द लाइन हैज बीन extracted, and the poem is none other than Immortality Ode.
पोएम इज नन अदर दैन टिंटन एबी। टिंटन एबी की लाइन है, डी है। मैं तो दिनेश का आंसर देख करके टिक कर दिया था कि इमोर्टलिटी ओड, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज टिंटन एबी। नेचर नेवर डिड बिट्रे दोज हु लव्ड हर। जो उसको लव करते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। राइट, मोहब्बत करने वाले ही धोखा देते हैं सर। अरे मोहब्बत करते क्यों हूं भाई? इस डॉक्टर ने कहा कि मोहब्बत करिए। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत आपको आपके रास्ते से भटकाने का एक मेक शिफ्ट माध्यम है। राइट, एक मेक शिफ्ट माध्यम है। मोहब्बत हमेशा आपको धोखा देती है, आपको कभी अपग्रेड नहीं करती। मेरे एक सर थे, वो कहा करते थे कि एवरीबडी फॉल्स इन लव, एवरीबडी फॉल्स इन लव, नोबडी गोज अप इन लव। कोई अप नहीं होता, हर कोई गिरता है। तो जब गड्ढे में गिरना है तो मोहब्बत क्यों करनी है? गड्ढे में गिरने के लिए सब धोखा है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। राइट, असली चीज क्या है? असली चीज ये है कि आपसे मोहब्बत करेगा कौन? जो आपके लेवल का होगा, है ना। आप फेलियर है तो आपसे फेलियर मोहब्बत करेगी या करेगा। अगर आप सक्सेसफुल है तो आपसे सक्सेसफुल वाला मोहब्बत करेगा। अपने औकात के हिसाब से ही आते हैं। और अगर आप फेलियर हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने मोहब्बत करने का नाटक कराए, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी साथ बता दूं। क्योंकि जिसको आप मोहब्बत समझते हो ना, वो मोहब्बत नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन है। वो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेगी आपके रास्ते से। कभी भी आपको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएगी। आपकी गर्लफ्रेंड कभी ये नहीं कहेगी आज मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम वर्ड्सवर्थ को तैयार नहीं कर लेते। क्या करेगी? वर्ड्सवर्थ को तुम पढ़ रहे होगे, मैसेज आ जाएगा, आज तुम्हें मेरी याद नहीं आई, आज तुमने मुझे फोन नहीं किया, है ना, मैं तुमसे नाराज हूं, तुम मुझसे नाराज हो क्या? यही सब लेडीज टॉक जो होते हैं, यही सब, इन्हीं सबको लोग गलती से मोहब्बत समझ बैठते हैं। कभी ऐसे मोहब्बत ना करिएगा, हमेशा बच के रहिएगा। ऐसी मोहब्बत हमेशा धोखा देने वाली होती है। और मोहब्बत ही धोखा है यार, मोहब्बत ही धोखा है, बाकी कुछ नहीं। मोहब्बत करिए किससे? मोहब्बत करिए अपने आप से। मोहब्बत करिए इन मोटी मोटी किताबों से, है ना। मोहब्बत करिए मोटी मोटी किताबों से, बहुत आगे चले जाओगे। और अगर किसी भौतिकतावादी इंसान से मोहब्बत कर ली जो आपके मोबाइल की दुश्मन बन जाए फोन कर करके, कभी आपको आगे नहीं ले जाएगी, हमेशा आपको पीछे रखेगी, है ना। चलो, सब मोह माया है, चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते। अपने आप से मोहब्बत करिए, अपने आप से मोहब्बत करिए, यू विल गो अप इन लव। और अगर आपने किसी से मोहब्बत कर ली है, देन यू विल गो टू हेल। राइट, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बॉयफ्रेंड्स भी ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, बॉयफ्रेंड्स की भी बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके साथ ही होता है। राइट, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट मैरिज करना चाहिए। बिल्कुल, मोहब्बत तो बाद में भी हो जाती है, और मोहब्बत वगैरह कुछ होता नहीं है, शादी वगैरह कुछ नहीं होता, सब समझौते का नाम है। अलग अलग टाइप से समझौता करना पड़ता है। मोहब्बत में भी समझौता, शादी में भी समझौता। वो पढ़ाई से समझौता मत करो, है ना। पढ़ाई से जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कोर है, उससे समझौता ना करिए। बाकी सबसे समझौता करते रहिए, सब चलता रहेगा। ठीक, चलो आगे आ जाओ। देखिए, जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो चुपचाप मुझे गालियां देते हुए आंसर दिए जा रहे हैं क्वेश्चन का, है ना। चल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइव्स स्टार। जो सोल है, जो हमारे अंदर है, वही लाइफ का स्टार है, वही सूरज है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन पर आ जाओ। टिंटन एबे, इमोर्टलिटी ओड टू अ स्काई लॉर्ड, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तभी मुझे क्या लिखा है, तभी मुझे मन ही नहीं होता शादी करने का। अरे क्या रखा है शादी में? कुछ नहीं रखा यार। शादी जस्ट सोशल एंड मोरल बाइंडिंग्स, नथिंग दैन दैट, है ना। चलो, आंसर है इसका इमोर्टैलिटी ओड। आंसर इज बी, उसी की लाइन है। द फिफ्थ स्टैंजा स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइन, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइव्स स्टार। क्वेश्चन नंबर 27।
Galsworthy's tragedies are. Galsworthy's tragedies are tragic comedies, heroic tragedies, social tragedies, are classical. चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम जिंदगी है, जिंदगी रुकी गाड़ी रुकी। देखो शशि दुबे जी भी आ गई हैं, है ना, बड़ा टाइम निकाल के हैं, ये भी हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, तो बड़ा मुश्किल से घर की मुर्गी साग के बराबर होती है ना, इसलिए बड़ा मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। चलो आंसर बता दो क्वेश्चन का। मैम स्टूडियो में नहीं है क्या सर? अरे मैम स्टूडियो में बैठ के क्या करेंगी भाई, वो भी कहीं मोबाइल लिए बिजी होंगी, है ना, तुमसे ज्यादा खाली है वो। आंसर बताओ क्वेश्चन का जी। यूपी टीजीटी वाले इसका आंसर बताएंगे बेहतर, क्योंकि गाल्सवर्दी उन्हीं के सिलेबस में है। गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज कैसी ट्रेजेडीज होती हैं? देखिए सपना भी आ गई है हमको नमस्ते करने, झुमका लेकर बरेली से। कोई रामपुरी चाकू लाता है, कोई झुमका लाता है ना। चलो आंसर इसका क्या है, किस पे क्लिक कर दिया जाए? ऐसा नहीं है, कैसा है फिर? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर ट्रेजिक कॉमेडीज है कि सोशल ट्रेजेडीज है? सोशल ट्रेजेडीज है ना। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर सोशल ट्रेजेडीज। ऑलराइट, लो सर मीटअप कब करोगे आप? अरे भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, गरीब आदमी हूं, सरकारी नौकरी करता हूं, सरकारी नौकरी वाले हमेशा गरीब होते हैं, कहां से मैं मीटअप करूंगा? मैं तो ऐसे अलग अलग शहर को घूम करके अपने बच्चों से मिलाया करूंगा, है ना, और स्वाति को भी बुला लिया करूंगा उसमें। द डॉल्स हाउस वॉज रिटन बाय, डॉल्स हाउस इज द प्ले रिटन बाय whom? किसका प्ले है डॉल्स हाउस? जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, हेनरिक इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? हेनरिक इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी। हु रोट द प्ले? आपको चाहिए तो बताओ, मैं जाऊंगी चाकू बाजार। अच्छा चाकू बाजार भी है क्या तुम्हारे यहाँ? अरे भगवान बिल्कुल नहीं जाना, मेरे लिए बिल्कुल में चाकू की जरूरत नहीं है। जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, हेनरिक इब्सन और जी.बी. शॉ। डॉल्स हाउस इज अ प्ले फर्स्ट परफॉर्म इन 1875, रिटन बाय अ नॉर्वेजियन प्लेराइट। नॉर्वे का एक प्लेराइट था हेनरिक इब्सन, और उसी ने इस प्ले को लिखा था, और यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है न्यू वुमन का। इसकी जो हीरोइन होती है नोरा हेल्मर, नोरा हेल्मर फाइनली अपने हस्बैंड को छोड़ करके चली जाती है, राइट, शी शट द डोर एंड वेंट आउट। और ये अपने आप का पहला ऐसा इंस्टांस था वेयर अ वुमन हैड टेकन सच अ ह्यूज स्टेप, राइट, टू लीव हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को छोड़ने का। और ये हेनरिक इब्सन का प्ले है, हु वाज अ नॉर्वेजियन प्लेराइट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस इज अ commentary upon the present administration of the period। justice is a commentary, justice is a play। किसका प्ले है जस्टिस? जस्टिस इज अ प्ले बाय गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी का प्ले है जस्टिस, एंड इट इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। जेल प्रशासन सुधार पर एक कमेंट्री है पीरियड की। ये किसका स्टेटमेंट था, राइट? ये एसी वर्ड, निकोल स्केम्प और टी.एस. एलियट। हुज स्टेटमेंट्स आर दीज? पूरा चाकू का बाजार है। अरे मैं तुम्हारी तरह बिरयानी थोड़े न खाता हूं जो मुझे चाकू चाहिए हलाल करने के लिए, है ना। मैं तो घास फूस खाने वाला आदमी हूं, मेरा छोटे चाकू से काम चल जाता है। देखिए सपना हमारी मैडम के लिए झुमका लेके आएंगी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिलेक्शन कराइए, अपना सिलेक्शन कराइए, फिर बड़ा बड़ा गिफ्ट लूंगा आपसे, राइट। द क्रिटिक हु रिमार्क्स दैट
justice is a commentary upon the present administration of the period was AC word। आंसर इसका सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। फोल्डर, फोल्डर इज अ कैरेक्टर इन, किस प्ले का कैरेक्टर है फोल्डर जी? फोल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले ऑल द 4 प्लेस वर बाय गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के 4 प्लेस हैं एंड फोल्डर किसमें कैरेक्टर है? लॉयल्टीज, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइप, इन विच प्ले द कैरेक्टर फोल्डर अपीयर्स। क्वेश्चन नंबर 30। सिल्वर बॉक्स की जस्टिस? कोई सिल्वर बॉक्स बता रहा है, कोई जस्टिस बता रहा है, किसको क्लिक करा जाए, किसको कलेक्ट किया जाए? जी सुगंधा तो गलत ही बता रही है फिलहाल। फोल्डर इज अ कैरेक्टर इन द प्ले, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर विद whom? मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर विद जस्टिस ना? बीके को तो पहले ही रॉन्ग हो गया। फोल्डर इज अ कैरेक्टर इन द प्ले, राइट? The correct answer is justice. William Falder is a character in the play Justice, published in 1910. And Falder is the hero of the play. वो हीरो होता है प्ले का। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू शशि हमारी बात लिख देने के लिए। Strife dramatizes. Strife is also a play by John Galsworthy. And what does it dramatize? ये dramatize क्या करता है? A drama between lovers, an interpersonal relationship, a strike, a war. बीके तुम्हारी शादी हो चुकी है, don't fall in love, it is crime. A drama between lovers, an interpersonal relationship, a strike, a war. What does the play Strife dramatizes? किसको ड्रामेटाइज करता है? बोलिए। स्ट्राइक ड्रामेटाइजेस a strike. स्ट्राइक को रिप्रेजेंट करता है एंड द स्ट्राइक टेक्स प्लेस इन अ फैक्ट्री। कंपनी में जो है फैक्ट्री में स्ट्राइक होती है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd। A character which always remains almost unchanged throughout the story. Throughout the story, the character remains unchanged. Right? The character remains unchanged throughout the story। और वो कैसा कैरेक्टर होता है? राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, कैरिकेचर और डायनामिक कैरेक्टर। Which type of character is here who always remains unchanged throughout the play? Right answer, yes. बुशरा, प्रियंका, कविता, स्वाति, अजय, सुबोध, रीता, संयोगिता, मीरा, श्वेता, यूनिक, जूली, फिरोज, प्रतिभा, हुडा, सतेंद्र, रेनू, मिथिलेश, पीके, भावना, मौसमी। शाबाश। प्लेजर प्लेटफॉर्म, हेमलता, धर्मपाल, प्रदीप सोलंकी, मिथिलेश प्रकाश, श्रुतिका, अजय मिश्रा, रमेश, शारिका। ये द डेफिनेशन हियर इज गिवन ऑफ फ्लैट कैरेक्टर। Right, round characters and flat characters. There are 2 types of characters according to E.M. Foster. E.M. Foster के according 2 types के characters होते हैं, round characters and flat characters. Round characters are dynamic characters. They keep on changing throughout the work. But one who is a flat character, he retains the same characteristics throughout the play. उसको कहा जाता है flat character। एंड फ्लैट कैरेक्टर का ये डेफिनेशन दिया। राइट आंसर इज बी, सॉरी सी नहीं बी।
Right answer is B. Next question, 33rd. The unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called. Unbroken flow of thought and awareness. Unbroken flow of thought. Right, where thoughts do not break, it keeps on going, keeps on, चलती रहती है thought. और थॉट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफानी, नेगेटिव कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन. फॉर क्रिटिकल वर्ड्स, फॉर लिटरेरी वर्ड्स आर गिवन हियर. अनब्रोकन थॉट क्या होता है? राइट, अनब्रोकन थॉट. राइट, स्ट्रीम जो है अनएंडिंग, अनइंटरप्टेड स्ट्रीम ऑफ थॉट फ्लो जो है, इट गोज ऑन. कहां पर चलता है? ये चलता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में. राइट आंसर इज ए. द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी in 1890, and then stream of consciousness was applied in the novels by James Joyce, by Henry James, by Virginia Woolf, right, and by James Joyce. Several writers, they exploited the technique of narration in their novels. Stream of consciousness is the uninterrupted flow of thoughts. Question number 34th. Harry of the family reunion is haunted by. Harry family reunion का character है and he is haunted by ghosts, Eumenides, Euripides, Dowago. किससे हॉन्ट होता है? कौन उसको परेशान करता है? हैरी को. शाबाश, वेल डन, वेल डन. यूमिनिटीज कौन होती हैं? फेरीज ऑफ हेल. यूरिपिडीज वॉज अ ग्रीक प्लेराइट. यूरिपिडीज वॉज अ ग्रीक प्लेराइट and dogger is Amy in the play. Ghosts तो आप जानते ही हो. और which Harry of the family reunion is haunted by. haunt कौन करता है? Harry is haunted by the fairies of hell, Eumenides. Eumenides उसको haunt करती हैं. Right answer is B. Right, ये UPPGT and NVS. Next question. Which of the following is not a play by T.S. Eliot? T.S. Eliot का प्ले कौन सा नहीं है? Which of the following is not a play by T.S. Eliot? सॉरी सर, बट नूरी मैम का पता नहीं चल रहा है. अच्छा रमेश, नूरी ने मुझे मैसेज तो किया था कुछ अभी थोड़ी देर पहले ही. आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ. तब मैंने पढ़ा तो नहीं है बिकॉज आई वॉज हियर विद यू इन योर क्लास. आई एम अनएबल टू अटेंड द लाइव सेशन बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज. राइट, शी जो उसका घर है ना बहुत इंटीरियर में है एंड इन द इंटीरियर शी इज फेसिंग द नेटवर्क इश्यूज. और नेटवर्क इशू फेस कर रही है इसलिए उसने नहीं किया है आंसर. राइट, all right. The birthday party is a play by Harold Pinter, not by T.S. Eliot. Harold Pinter का play है birthday party and rest the three, the
Elder statesman, the cocktail party and the family reunion were written by T.S. Eliot. Next question, 36th. What kind of work is Samson Agonist? Samson Agonist किस टाइप का वर्क है? Samson Agonist is a work by John Milton. John Milton का वर्क है ना, और किस टाइप का वर्क है सैमसन अगोनिस्ट? ग्रीक ट्रेजेडी है, एपिक ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है और ग्रीक कॉमेडी है। 34th का आंसर बताया नहीं क्या रमेश? ऐसा नहीं हो सकता। 34th का आंसर नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये है ना, इसका आंसर यूमिनिडीज है। और 36th का आंसर क्या है कि what kind of play Samson Agonist? Samson Agonist is a tragedy and written by Milton and it is in the form of Greek tragedy. Greek tragedy के फॉर्म में है। Right answer is A. Question number 37. John Milton belonged to, किस एज से बिलोंग करते हैं जॉन मिल्टन? बता दो आंसर फटाफट फटाफट। एलिजाबेथन एज से, जैकोबियन एज से, कैरोलिन एज से या फिर प्योरिटन एज से? किस एज के हैं जॉन मिल्टन? एलिजाबेथन एज from 1558 to 1603, Jacobean age 1603 to 1625, and Caroline period 1625 to 1649, and Puritan period starts when Queen Elizabeth died, and from 1603 to 1660. This period is called Puritan period, and Milton belongs to which period? Milton belongs to Puritan period. Milton was born in Jacobean age. Milton started writing in Caroline period, and after the death of King Charles II, he became the Latin secretary, right, equal to the foreign minister, right, and he started the Paradise Lost during this period. So right answer is D. All right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38. Who called Milton the Lady of Christ? मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट किसने कहा था? डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नेल, हिज क्लासमेट्स और किंग चार्ल्स फर्स्ट? किसने उनको कहा था लेडी ऑफ क्राइस्ट? क्राइस्ट वॉज द नेम ऑफ द कॉलेज. Christ was the name of the college. Milton was the student of Christ's college. क्राइस्ट कॉलेज के वो स्टूडेंट हुआ करते थे और किसने उनको कहा था क्या लेडी ऑफ क्राइस्ट? उनके क्लास स्टूडेंट्स, उनके क्लासमेट्स ही उनको लेडी कहा करते थे बिकॉज ऑफ हिज एक्सेसिव ब्यूटी. इतना खूबसूरत थे ना वो कि उनको लेडी कहा करते थे उनके क्लासमेट्स. तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर सी है और आप सबका राइट आंसर सी है. क्वेश्चन नंबर 39. Lycidas commemorates the death of Milton's friend King Edward, the death of his friend Edward King, the kingship of Charles I, Commonwealth government. Who is commemorated by Mr. Milton in the poem Lycidas? Question number 39. Question number 39. Yes, come on. Who is commemorated in Lycidas?
भावना, हुड्डा, नूरी, मिथिलेश, पीके, रमेश, अर्चक, स्वाति, धर्मपाल, सारिका, जूली, मिथिलेश, प्रकाश, मीरा, यूनिक, दिनेश, शशि, हुड्डा, डबल आंसर नहीं माना जाएगा हुड्डा, अमन, प्रताप, रीना, रीता, रेणु, प्रियंका, शिब्बू, प्रतिभा, प्रदीप, हेमलता, संयोगिता, स्वाति, सुबोध, नीरज, बीके, रीता, बीके। अब आपका मैसेज मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू ब्लॉक योर मैसेज नेक्स्ट टाइम, अगर आपने फिर इस टाइप के मैसेजेस किए तो, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारी क्लास में आते हो कि आप क्लास में नहीं आते। फन इज फॉर अ मिनट, फॉर 2 minutes, but it is not a permanent business. Right answer to the question is, few people have clicked on answer A. A is not the right answer. Right answer is B. The death of his friend Edward King, not King Edward. King Edward पे नहीं हो, वो एडवर्ड किंग पर एलिजिहा। सो राइट आंसर इज बी। यदि बहुत लोगों ने बाद में अपने आंसर चेंज भी कर लिए हैं, राइट, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना, और आपने आंसर गलत भी कर दिया। इट इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, ना कि किंग एडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Milton wrote tracts on divorce. Tracts on divorce were written by Milton. And how many tracts were written by Milton? कितने tracts लिखे थे उन्होंने? 4, 5, 6 or 7? How many tracts were written on divorce by Milton? 7. Wow. Achak, Sabash. Ramesh says it's 4. Sayogita 4. Ramesh says that 4. Right. Majority is once again with option A. All right. And Milton wrote 4 tracts on 4 tracts on divorce. And I had told you the names of the 4 tracts. 4 tracts थे, चारों के नाम भी आपको बताया था। And you must remember those 4 tracts. 4 tracts were written by Milton on divorce. Divorce पर 4 tracts लिखे हैं जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। फटाफट आंसर करिए, 10 क्वेश्चंस और बचे हैं। नाउ यू आर ऑन 41st. Which of the following was highly critical to John Milton? हाईली क्रिटिकल टू जॉन मिल्टन कौन था? राइट, क्रिटिकल मीन्स हु क्रिटिसाइज्ड मिल्टन हाईली? मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ और सैमुअल जॉनसन? मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ, सैमुअल जॉनसन. Who criticized Mr. John Milton extensively? No, Poonam, not at all. Milton was highly criticized by Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson ने criticize किया. Matthew Arnold appreciated John Milton, and John Milton was one of the 4 great writers according to Matthew Arnold. And Matthew Arnold put him into Touchstone method. Right, तो Matthew Arnold तो है ही नहीं. Wordsworth even wrote a sonnet, और sonnet में किसको बुलाया? ओ मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, London 1802. तो वो भी क्रिटिसाइज नहीं करते, वो भी मिल्टन को इन्वोक करते हैं। क्रिटिसाइज करते कौन है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज्ड मिल्टन, मिल्टन्स लिसिडस, but he appreciated Milton's Paradise Lost. Right answer is D. Question number next पर आते हैं, और next question 42nd. Which of the following is not an autobiographical work? Autobiographical work कौन सा नहीं है? All the 4 works are written by John Milton. Paradise Lost,
on his blindness, Samson agonist on the morning of Christ's nativity. क्राइस्ट नेटिविटी कौन सा वर्क है जो ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है? पैराडाइज लॉस्ट is an epic divided into 12 books. On his blindness is a sonnet. Samson Agonist is a Greek tragedy on the pattern of Greek, and Christ's nativity is a nativity ode. Which of the following is not an ऑटोबायोग्राफिकल वर्क? कौन सा वर्क है जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क नहीं है? राइट, पैराडाइज लॉस्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ऑटोबायोग्राफिकल, एंड सैमसन अगोनिस्ट इज ऑल्सो ऑटोबायोग्राफिकल. सैमसन अगोनिस्ट वॉज अ ब्लाइंड मैन, सो वॉज मिल्टन. राइट, सो वॉज मिल्टन. सो ये भी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. और on the morning of Christ's nativity ode that he wrote in his first phase of life, and it is not autobiographical. Right, ये autobiographical नहीं है. Right answer is D here. Right, rest of the three are autobiographical work. All right, question number 43. Milton defended regicide in which work? Right, in which work he defended regicide? Regicide का मतलब क्या होता है? Regicide means murder of the king. Regicide means murder of the king. King के murder को regicide कहा जाता है. Right? In which work he advocates regicide? Right? Milton wrote 2 books in order to defend the murder of king in 1649, and one of the books is Iconoclast, and the second book was Tenures of English. The tenures of kings and magistrates. Right, tenures of kings and magistrate उसका नाम था जो उन्होंने लिखा था. Right, tenures of kings and magistrates was the name of the book written by Mr. John Milton to defend regicide. एरोपेजेटिका was written to defend the licensing act. लाइसेंसिंग एक्ट को डिफेंड करने के लिए एरोपेजेटिका लिखी गई थी. फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखी गई थी. पैराडाइज लॉस्ट तो आपको पता है, राइट, एपिक पोएम है. और ऑफ एजुकेशन इज एन एसे ऑन एजुकेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 44th. अब ठीक है ना? All the messages of Sugandha has been deleted. किसी को जवान समझ में नहीं आती तो फिर एक्शन समझ आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. मिल्टन वॉज लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग. मिल्टन लैटिन सेक्रेटरी थे कब? रेस्टोरेशन पीरियड में, कि कैरोलिन एज में, कि कॉमनवेल्थ पीरियड में, या फिर सिविल वॉर में. राइट, मिल्टन वॉज अ लैटिन सेक्रेटरी
व्हेन किंग वॉज मर्डर्ड, जब किंग की मर्डर हो गया था तब वो लैटिन सेक्रेटरी हो गए थे, है ना। और फिर जो गवर्नमेंट बनी थी वो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी फ्रॉम 1649 टू 1660. This is the time period of Commonwealth government. All right, next question. Theaters were closed in. Simple questions are फटाफट आंसर कर दीजिए. Theaters were closed in. Theaters कब क्लोज हुए थे? 1942 में, 1600 में, 1660 में. दो बार 1660 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों नहीं होगा. राइट, थिएटर्स कब हुए थे क्लोज? 1642 में. Theaters were closed in 1642 and they were reopened in 1660. Right, closed in 1642 and reopened in 1660. All right, next question. Charles I was killed in. Charles I की killing कब हुई थी? Right, Charles I was killed in 1644, 1669, 1642, 1659. When was he killed? कब डेथ हुई थी चार्ल्स फर्स्ट की? क्वेश्चन नंबर 46 जी, फटाफट आंसर करिए. चार्ल्स फर्स्ट was killed in. There was a civil war in England in the 4th decade of the 17th century, and King Charles I was assassinated. He was murdered. और जब मर्डर उनका होता है उसके बाद ही कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. एंड ही वाज मर्डर्ड इन 1649 एंड दैट इज नॉट गिवन हियर इन ऑप्शन. राइट, वो ऑप्शन में नहीं दिया है. सो आई बेग अ पार्डन फ्रॉम यू कि द मर्डर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट टुक प्लेस इन 1649. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. My faith in the people governing is on the whole infinitesimal. My faith in the people governed is on the whole illimitable. Who says this? Who made this statement? My faith in the people governing is infinitesimal. My faith in the people governed is illimitable. दो टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं. एक तो वो लोग हैं जो गवर्न करने वाले लोग हैं और एक वो लोग हैं जो गवर्निंग लोग हैं. Who made this statement? Question number 47. बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन and a new question as well. This statement was made by whom? This statement was made by a person, made by a writer who was the real sufferer of the Victorian industrialization and who was in favor of the governed people, not in favor of the governing people. And this man who wrote this statement was Charles Dickens. This statement was made by Charles Dickens. Right answer is A. Nobody has given the right answer so far. So now click the right answer and write the right answer in your notebook. The statement who says this कि my faith in the people governing is infinitesimal and my faith in the people governed is on the whole illimitable. Right, governed people पर मेरा faith है, governing people पर बहुत कम faith है. Right answer is A. Now next question 48th. Which of the following magazines is called a gentle mouthpiece of reform? A gentle mouthpiece of reform किस मैगजीन को कहा जाता है? Household Words, All the Year Round, Cornhill Magazine, London Magazine. किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48.
48। अरे अब तो सी करेक्ट है भाई, चार्ल्स डिकेंस तो अब करेक्ट हो ही गया है। अब कौन सा करेक्ट है इसका भी जवाब दे दो ना। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या है? हाउस होल्ड, शाबाश। दिस स्टेटमेंट अ जेंटल माउथ पीस ऑफ रिफॉर्म, इस एक मैगजीन थी जिसको चार्ल्स डिकेंस ने कहा था। And which magazine was described as the gentle mouthpiece of reform? It was the magazine of Charles Dickens himself, and the name of the magazine was Household Words. Household Words was the name of the magazine, and answer A is the right answer. Right? No idea? Then get idea. आइडिया और वोडाफोन एक हो गए हैं, उससे भी काम चल जाएगा। Do the boys hall appears in? Do the boys hall is the name of a school. एक स्कूल का नाम है Do the boys hall, that appears in a novel by Charles Dickens. डिकेंस की एक नॉवेल में अपीयर करता है। ऑप्शंस आर हियर, निकोलस निकलबी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड और ब्लीक हाउस। 4 options are here. In which novel of Mr. Charles Dickens you find the Do the Boys Hall? Death Boys Hall किस नॉवेल में मिलता है? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 49। शाबाश। 49 का आंसर कोई ए, कोई डी, कोई सी, कोई ब्लीक हाउस। Do the Boys Hall appear in which novel? Yes. Do the Boys Hall appear in the novel निकोलस निकलबी? निकोलस निकलबी में Do the Boys Hall है, और यहीं पर निकोलस निकलबी was employed and here he beats the school teacher Mr. Wickford. यहीं पर पीटता है और पीट कर यहां से भाग खड़ा होता है। वो नॉवेल है निकोलस निकलबी। राइट आंसर इज ए। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं क्या है आज के पिटारे में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। आज आपकी छुट्टी। राइट, आज आपकी छुट्टी। बहुत एंजॉय किया आपने और बहुत परेशान भी किया आपको। नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस। चलो, Pictures from Italy was written by. Pictures from Italy was written by Charles Dickens, George Eliot, Matthew Arnold और P.B. Shelley. Pictures from Italy. 48 तक अभी राइट भी कर लिया है, शाबाश, ग्रेट, क्लैपिंग। Clapping. Who wrote the book Pictures from Italy? Right? चलो, 50 पे नो आइडिया है तो आपको भी आइडिया लेने की जरूरत है और सबको आइडिया लेने की जरूरत है। ऑलमोस्ट पीपल हैज गिवन द आंसर बी, और ऐसा तभी होता है जब आप अपना दिमाग नहीं लगाते, दूसरों की नकल मार रहे होते हैं, टीप रहे होते हैं। तो टीपना करिए बंद, अपना दिमाग लगाना शुरू करिए, और नहीं तो एग्जाम में कर जाओगे फेल। अपने दिमाग से आंसर करिए, नहीं आता तुक्का लगाइए, बट ऊपर वाले का देख के नीचे बी आंसर मत लगाइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ये चार्ल्स डिकेंस का वर्क है पिक्चर्स फ्रॉम इटली। जब वो इटली से लौट करके आए थे तो उन्होंने इस वर्क को लिखा था, पिक्चर्स फ्रॉम इटली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर joining the class, thank you so much for loving me, thank you so much for liking your channel and sharing your channel. All the best. मिलते हैं tomorrow with few new questions, few more questions. Good luck. All the best. Happy रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, डांट खाते रहिए हमारी, सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इतना बढ़ते रहिए, इतना आगे बढ़ते रहिए ना, यहां तक सूरज भी नहीं पहुंच सकता। थैंक यू, गुड लक, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।